March 27, 2025. After breakfast at our hotel Drukgyal Twin Tower, Thimpu city at 9 am, we packed our bags and started our journey towards Punakha, old capital of Bhutan, famous for a few historical landmarks, cool weather, and a lovely landscape. Thimpu to Punakha distance is only 73 kilometers. The highway is smooth, but it takes at least 2 or 30 minutes to cover the distance.
On our way, we came across a mountain pass by name Dochu at 10,300 feet. It is a beautiful location, misty during spring and summer, snowy during cold winter months. There are 108 memorial chortens or stupas known as Druk Wangyal Chortens built by Ashi Dorji Wangmo Wangchuk, the eldest queen mother. These were built as a memorial in honor of the Bhutanese soldiers who were killed in the December 2003 battle against Assamese insurgents from India. The construction completed in mid-June 2004. Apart from the Chortens, there is a monastery called the Druk Wangyal built in honor of the fourth Drukgyalpo or head of the state of Bhutan, Jigme Singye Wangchuk. The open grounds in the front yard is a venue for the annual Dochu Druk Wangyal festival. The pass with 108 memorial chortens is adjacent to the country's first Royal Botanical Park. We reached Dochu at around 9:45 a.m. So this is the Dochu Pass. The elevation of this place is 3,100 and the name Dochu means piled up of rocks. So the stupas over here, normally people say like there is 108 stupas. So actually there is 109 stupas over here and 3 stupas on the road right here, which makes up like 112 stupas. So the stupa over there, is constructed in 2004, and by our royal mother Ashi Dorji Wangmo Wangchuk. And this in 2003 Bhutanese fought an external war. They were neither Tibetans neither Indian nor Bhutanese. They didn't have citizenship of both the places. So these stupas are constructed for those people who have lost their lives in that war. And on the first circle we have 45 stupas. Then in the second we have 36. Then on the first we have 27, then on the top we have 1, which makes up 109. So this stupa is recently constructed in 20th century. Memory of somebody? Yes, memory of those 11 soldiers who lost their life, and even for those enemies who lost their lives. So even for enemies? Yes. So this one is called as Namgye Khansang stupa, and it's constructed in 20th century by a lama named Somzangpo, for the travelers to have like a safe passage from here. So in order to, they say that there is an evil force over here. So in order to subdue that, he has constructed this stupa. Then the one over there is called as Maniwal, the long one. It's called as Maniwal, and is erected by our first king when he was serving as a 30th Trongsa Penlok before getting enthroned as the first king, in order to mark the last civil war of the country, which happened on 1885 between our first king and there is another one called Insurgents and Alutoji. Internal. Yes, internal civil war. And there is another stupa over here. Yeah, smaller one. That one, and is constructed in the 17th century by our fourth political leader, Gelsitin Zirabge, for his in the memory of his late brother Chimpa Gelsin. So this is all about this stupa. So if you want, you can circumambulate. And here, this side? Here, this side is a cafeteria. Cafeteria. Yes, okay. And the Himalayan snow-capped mountain ranges is over that side. Okay, so on a clear day you can see the Himalayan peaks. Yes. And the name of this stupa is Druk Wangyal stupa. Okay. Druk Wangyal means countries. Druk means country, Bhutan only. Yeah. So country's victory over enemies. Okay. So that's the meaning of Druk Wangyal.
So like I said, like before pandemic, those guests coming from India, they don't have to hire a guide. They don't have to pay the SGF also. Yeah. But as soon as we opened our border, one guest from India, he climbed on one of those stupas. He took a photo and uploaded it on social media. From then on, the guide and STF is made compulsory for Indians also. No, there are stupid people all over. Everywhere there are stupid people. Yes, even Just to become famous yes. and make their posts viral, they do all these kinds of jugglery. Yes, even in our country, there are some people. They don't respect the rule of the country. Yes. And when there is some religious aspect to that, you should follow that. Yes, so here we are saying like if you are drinking the water of that valley, then you must abide by the rule of that valley also. Yes. Weather was cold and windy, also cloudy and misty. A walk around the Chortens gave us a refreshing feeling. We didn't feel acute mountain sickness because oxygen level in Bhutan is much higher compared to other Himalayan regions.
We then walked into the cafe nearby. I had a ginger lemon honey tea while Meena had a milk coffee. There is also a clean and neat restroom here. They also have a souvenir shop, which I shall try to show in one of the forthcoming parts. After 45 minutes halt, we moved ahead and reached the Jichulam farmers market on the way. दोचुला पास कैसे है साहब जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और धूप जलने से तो वो पूरा जोमुलारी हाँ, गंगर भी देखते हैं। लेकिन हमें ये पसंद आया, ये मिस्ट है ना, फॉग है ना, क्लाउड, इसका इफेक्ट और भी अच्छा था। क्योंकि हिमालय तो बहुत देखा है हमने। ये वाला क्या है था? हाँ, ये क्या है? नहीं वो आप, हाँ ये क्लाउड। हाँ नहीं वो नहीं चाहिए था, लेकिन मिल गया ना। ये बोले कि उन्होंने
गॉड को फोन किया था अच्छा अच्छा क्लाउड हटाने के लिए लेकिन हटाया नहीं, ज्यादा हो गया क्योंकि उसके शायद बाद गॉड नहीं सुन रहे नहीं गॉड को मेरा पसंद अच्छा लगा अच्छा। मैं नहीं बोला, मेरा अंदर था वो। आते वक्त देखेंगे, अगर देखने को मिले तो। हाँ वो मिल जाएगा। हाँ। ये अभी कल बारिश होने का ये था वेदर फोरकास्ट। हाँ वो फोरकास्ट एक्यूरेट नहीं होता है ना। वेदर एक्यूरेट नहीं है। नेचर को कोई ये कर नहीं सकता। हमारे इधर कहना है कि ये अभी नहीं होता, वो पहले होता था। पहले जो मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो स्टडी करता था ना, वैसे ही होता था। अभी ये सब चेंज हो गया ना, एनवायरनमेंट हर जगह ग्लोबल वार्मिंग ये सब होके इसका डायरेक्शन चेंज होता है क्लाउड का। कभी कभी आज हो सकता है बारिश, बोल नहीं सकते। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। हमारा गाँव में तो नहीं होगा जैसा लग रहा है बरसात। हेलो ला
There we had a glimpse of many locally grown fresh organic vegetables and dried ingredients. I bought Sichuan pepper here, which our guide Sonam said is called as black pepper in Bhutan and is used in preparing dal and some dishes, if not added to pickle. It is very aromatic and not as pungent as the black pepper we use in India. This is the one that I was talking about. वो दाल वगैरह में अचार बना के पिकल बना के खाने से बहुत अच्छा होता है सर। अच्छा, हाँ इसको आप ब्लैक पेपर बोलते हैं? हाँ सर। ज़रा निकाल के भी दिखाइए, निकाल के। आप एक बार टेस्ट करना चाहते हो सर? वो सिचुआन पेपर, सिचुआन पेपर जैसा है। हाँ सर, अब ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ा सा लीजिए सर, वो आपको बहुत दिक्कत होगा। हाँ, सिचुआन पेपर है ये। हाँ सर, वो दाल वगैरह में बहुत लगा के खाने से बहुत अच्छा होता है सर। इसका फ्लेवर ही अलग है। हाँ, ये हमारे यहाँ नहीं मिलता। उधर नहीं मिलता है सर। अब इधर से लेके उधर सेल कर लीजिए सर। सेल क्यों करे? हम बांट देते हैं। और सेल करने से तो आपका सेल तो अपना तो धंधा ये नहीं है ना, बिजनेस। हम रिटायर्ड है ना। करना चाहिए ना सर। हाँ सर, नहीं, हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में बांट देते हैं। जो भी लेके जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी हमारा ऐसा है, कुछ भी जहाँ भी कुछ भी खरीदे, वहाँ वो धागा खरीदा था ना। उधर रेट कैसा है सर ये ब्रोकली? ब्रोकली बहुत महंगा है। इधर तो इतना महंगा नहीं है। वहाँ एक पीस को कुछ 120, 150। इधर तो इतने में 100 है, लेकिन वो सीजन आते हैं ना सर, वो थोड़ा प्राइस कम होता है। और भी कम होता है। ये सब आपका चिल्ली से स्पेशल जी, मोल ये भी चिल्ली है। ये बैंगन है सर। बैंगन है, ब्रिंजल। ये तो हमारे यहाँ ग्रो करते हैं जी। ऐसा नहीं, ये नहीं, ये भूत जोला के नहीं है ना। ये भी नीचे का ही है, अभी सीजन नहीं है। भूत जोला के नहीं है ना। भूत जोला के नहीं है, भूत जोला के। भूत जोला के मतलब वो बहुत स्पाइसी होता है, नागालैंड का। वो अमदी मुंह में लगता है। ये बहुत स्पाइसी है। हाँ, वो मालूम नहीं, तो वो इधर का नहीं है ना, वो इम्पोर्ट हुआ है। इम्पोर्ट हो गया। जी। वो कोरिएंडर तो अच्छा होता है। कोरिएंडर और लेट्यूस भी है। लेट्यूस, एस्पारागस है, आइस लेट्यूस है। ये स्प्रिंग ऑनियन है, ये हमारे स्प्रिंग ऑनियन। ये मस्टर्ड लीव्स है ना। ये स्पेनिश है। हाँ, स्पेनिश स्पिनच। जी स्पिनच है जी, मस्टर्ड लीव नहीं। नहीं वो साकी मोला साकी है। ये सब क्या है? वो रेडिश का ऊपर आता है ना सर, उसको अच्छा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वो जंगल- फिडलेट फर्न। हाँ, वो जंगल से लेके आते हैं। फिडलेट फर्न ये बहुत रेयर है, लेकिन हम लेके नहीं जा सकता, वो खराब हो जाते। हाँ सर, अगर आपको ले जाना है तो आप वो पेपर है ना सर। हाँ, वो पेपर लेके जाएंगे। अच्छा, बहुत फ्रेश है एकदम, और सब ऑर्गेनिक है ना। लोकल चीज है सर। और लोकल चीज है जी सर। आप चिली के साथ जो बनाते हैं ये चीज डालते हैं। हाँ, नॉर्मली। ये गाय का दूध से बनाते हैं। हाँ सर, गाय का भी बना सकते हैं वो, और यक का भी। हाँ, यक का भी। हाँ। ये ट्री टोमेटो है। ये क्या है? ट्री टोमेटो? ये ट्री टोमेटो नहीं है सर, अंदर कहीं ना मोला। हाँ, जी, वो वाइल्ड फ्रूट है सर। वाइल्ड फ्रूट है। नहीं बोला, उसका नाम क्या बोलते हैं लोकली? वो घी बोलते हैं सर। जी 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 ओके। जी। ये भी बहुत बड़ा साइज आता है इधर। ये रेडिश नेपाल में देखा था, इसे भी बड़ा होता है वो। और वो ये टोमेटो उधर। हाँ, ये नॉर्मल टोमेटो का ही है सर। ये नॉर्मल टोमेटो है। कुछ वाइल्ड टोमेटोज के होते हैं ना सर। हाँ, सावर टाइप का। हाँ, ये ऑनियन है। Onion। पोटैटो भी बहुत बढ़िया है। हाँ सर, वो कॉलीफ्लावर, रेडिश, ये ड्राई चिलीज ड्राई चिली। इधर ही ग्रो करते हैं। हाँ सर। हम्म। तो पेपर उधर।
ये यक मिल्क से बनाता है सर, और जो ये दो जगह से आता है, हाँ। वो नॉर्दर्न रीजन से, हाँ। लाया और लिंगजी से, हाँ। और उधर सेंट्रल भूटान से, भूटान से सर। अच्छा, ये कि वो विंटर में आपको एनर्जी देता है, हाँ, विंटर में इसीलिए बनाते हैं। हाँ सर, वो हाँ। बोन वगैरह, टीथ वगैरह के लिए अच्छा होता है, ओहो, कैल्शियम हो। है ना सर। वो ये एकदम रॉक सॉलिड है, हाँ, पत्थर वो जैसा है। थोड़ा मुंह में सॉफ्ट करके रखने से वो सॉफ्ट हो हाँ, जाएगा। सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ सर, ये ऐसा ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक मुंह है। में ऐसा ही सॉफ्ट ठीक है, हम ये रखेगा ये। हाँ सर, टेस्ट कर लीजिए। There is restroom facility here and one has to pay BTN 10 or INR 10 to use the toilet. I keep mentioning about restrooms because in Bhutan, urinating or defecating in public places is an offense and heavy fine is imposed if caught. A shopkeeper also gave us a couple of sample churpi or dried yak cheese cubes. Churpi, yak cheese, dry yak cheese. I tried to bite into one, but it was too hard to chew. Sonam told me that it is supposed to be kept in the mouth to melt like a candy, and the juices are gulped. ये full cube, जी full मुंह में डाल के। हाँ सर, ऐसे ही सॉफ्ट करके रखो। After visiting the farmers market, we went straight to Chimilakang, or fertility temple dedicated to the divine madman Drukpa Kunli, situated atop a hill in Punakha valley.